Hello dear students, I am here to discuss the point called role of microorganism in humus formation under the main title called soil microbiology. So in previous lecture we have discussed about the role of microorganisms in composting or in compost formation. In this lecture, we are going to see role of microorganisms in humus formation. What is humus? That we will discuss first. In short, if we will describe or if we will define the definition of humus, then it is a dark organic material that forms in soil when plant and animal matter decays or when plant and animal matter decompose. तो ह्यूमस ये एक फाइनल स्टेज होती है, फाइनल स्टेप होती है. It is similar to that of composting or it is similar to that of compost. So humus, it is non-living, finely divided organic matter in soil derived from the microbial decomposition. तो ह्यूमस ये नेचुरली भी फाइंड होते हैं, नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोस्टिंग. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कंपोस्टिंग से हमें कंपोस्ट मिलता है विच इज समवॉट सिमिलर टू ह्यूमस. आई हैव टोल्ड समवॉट सिमिलर टू ह्यूमस, नॉट कंप्लीटली सिमिलर टू ह्यूमस, बिकॉज इट ह्यूमस ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है. While compost, it is not a final product. So humus, it is the final product of organic decomposition. Humus, which ranges in color from, color कैसा होता है उसका, brown to black in color, and it consists of about 60% carbon, 6% nitrogen and small amount of phosphorus and sulfur. So it is rich in nutrients, micronutrients as well as macronutrients, जो कि 60% कार्बन कंसिस्ट करता है, 6% नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है and in a very small amount of phosphorus and sulfur. So as humus decomposes, its components are changed into forms and are used by the plants. So this is all about the introductory part of the humus. तो humus क्या है? ये एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट इज फॉर्म्ड इन द सॉइल व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डिकेज एंड इट इज this plant and animal matter is decomposed by the microbial or with the help of the microbes. तो इसे हम microbial decomposition भी कहते हैं. So it is, we can say that it is like mature manure. Okay, in short, humus, it is like a mature manure. What is importance of soil humus? तो soil humus का importance specially डिज़ाइन किया गया है to improve the soil fertility, to maintain the health of the crops and to increase the yield of the crops. So this is the simple importance or simple benefit of सॉइल ह्यूमस. तो सबसे पहले यहाँ पर वही मेंशन किया गया है कि सॉइल ह्यूमस का इम्पोर्टेंस क्या है. यहाँ पर लास्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, सो लास्ट पॉइंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ, विच इज न्यू पॉइंट, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल. जब प्लांट मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है then it causes complex organic compounds like lignin. Okay, so when decomposition of dead plant material, it causes complex organic compounds like lignin. Lignin क्या है? Lignin, it is the complex organic polymer which is deposited in the cell wall of many plants. Okay, so that is the lignin. It is found in the cell wall of many plants. So this complex compound
इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म। तो वो सिंपल फॉर्म कौन से? शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। कहने का मतलब ये है कि जब ह्यूमस, हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन या ह्यूमस प्रोडक्शन, तब क्या फॉर्म होता है, क्या एक्चुअली प्रोसेस होती है? देयर इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक लिग्नाइन इनटू द सिंपल फॉर्म लाइक शुगर, amino acids, some aliphatic compounds and some phenolics, organic acids. तो ये सब प्रोड्यूस होता है in the humus. Okay, so the humus is the composition of this all the simple compounds which are, यहीं पर प्रोसेस रुकती नहीं है, it is further transformed into microbial biomass that is only known as microbial humus. ये further transform किया जाता है microbial humus में और different products में, different product जैसे कि fulvic and humic acids. ओके, अब ये fulvic और humic acids क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो दिस इज द प्रॉपर्टीज और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस. इसमें बेनिफिट्स भी इंक्लूड किए गए हैं. इट इम्प्रूव्स द प्लांट ग्रोथ, इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट इज रेफर्ड एज द गुड स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, यूजफुल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Tiny solid particles improves the soil structure and it is brownish or black in color which absorbs the heat. तो इनकी कलर की प्रॉपर्टी भी है, this color it absorbs the heat. So these are various you can say benefits of humus. Humus it is the, अगर हम लैटिन वर्ड देखें ह्यूमस वर्ड का, देन द मीनिंग इज अर्थ ग्राउंड. इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. मतलब सॉइल में ये ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जो कंपोस्ट तैयार होता है, जो मैन्योर तैयार होता है, जो ह्यूमस तैयार होता है, इट इज completely organic manure, organic humus which is very healthy for the plant health. Then in the earth science, humus means any organic matter which has reached a point of stability where it will break down no further. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ह्यूमस ये एक फाइनल प्रोडक्ट है. ओके, ह्यूमस इज द फाइनल प्रोडक्ट. उसके अंडर वी कैन सी उसके अंडर डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता. सो ह्यूमस इट इज लाइक अ मैच्योर मैन्योर एंड इट इज अ फाइनल मैन्योर. उसके डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, बट इट इज द फाइनल मैन्योर. In agriculture, humus is often used simply to mean mature compost, as I told earlier, or natural compost. एक तो humus it is naturally derived or it is made by composting process. Organic matter and humus, what is the connection between organic matter and humus? Organic matter and humus ये हम interchangeably use कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमस को ही ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं. ह्यूमस इज व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, बट द फैक्ट इज दे आर नॉट इंटरचेंजेबल. व्हाई दे आर नॉट इंटरचेंजेबल? बिकॉज एज आई टोल्ड दैट ह्यूमस दो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, बट उसके भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. तो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हैं, it may contain the combination of or trace amount of small inorganic material. So it is not, हम completely उसे organic matter नहीं बोल सकते, okay, because it is combo of different things. Humus, it is a small stable portion of total organic matter in soil. So it is a small portion of the organic matter in the soil, और ऐसी प्रोसेस बाय विच डेड मटेरियल एंड modified organic matter forms the more complex and stable humus is known as humification. यानी कि humus formation की प्रोसेस को ही हम humification ऐसे बोलते हैं. Now what is composition of humus?
कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ह्यूमिक सब्सटेंस. एज मैं आपको बताते ही आ रही हूँ कि ह्यूमस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस. ओके, सो दैट ह्यूमिक सब्सटेंसेस इट कंसिस्ट ऑफ द फुल्विक एसिड. फुल्विक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? दिस आर सोल्यूबल इन वाटर ऑफ एनी एसिडिटी. उसका पीएच कितना भी एसिडिक हो, बट दिस एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. और ये एसिड का कलर हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिस आर येलो टू येलोइश ब्राउन इन कलर. नेक्स्ट एसिड इज फॉर्म ह्यूमिक एसिड. ह्यूमिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? दिस आर डार्कर इन कलर and the color of this humic acid is dark brownish black. Okay, so these are darker in color and soluble in all but the most acidic condition. तो ये highest acidic condition में ज़्यादा soluble है. And last humic substance formed is humin. The property of humin is it is the insoluble portion of humus and it is blackish in color. तो ये insoluble portion है ह्यूमस का. तो ये 3 डिफरेंट ह्यूमिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन. एंड दिस 3 आर differentiated by their properties and by the color or external morphological colors. So this is composition of humus. How actually humus is made? pathway वो कौन सा फॉलो करते हैं? As I told कि humus ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है. तो यहाँ पर प्लांट रेसिड्यूज ये डिकम्पोज होते हैं विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारा टॉपिक का नाम ही है कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमस फॉर्मेशन. सो व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व दैट वी विल सी इन फर्दर स्लाइड. तो यहाँ पर क्या होता है? प्लांट रेसिड्यू ये डिकम्पोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट रेसिड्यूज का कन्वर्जन करते हैं इनटू द ह्यूमस. तो कौन से फॉर्म में? लाइक शुगर, पॉलीफिनॉल्स, अमाइनो कंपाउंड्स एंड लिग्नाइन. और डायरेक्टली दिस प्लांट रेसिड्यूज आर कन्वर्टेड इनटू मॉडिफाइड लिग्नाइन्स विच फर्दर फॉर्म ह्यूमिक सब्सटेंसेस. और ये सब शुगर, पॉलीफिनॉल्स, अमाइनो कंपाउंड्स, लिग्नाइन, so with the help of the intermediate product known as quinones they produce final substance called as the humic substance. तो हमें finally humic substance चाहिए, humus formation चाहिए. तो with the help of this microorganisms and the reactant here is plant residues, intermediate product है quinones और final product है humic substances. तो यहाँ पर जो शुगर, पॉलीफिनॉल्स, अमाइनो कंपाउंड्स, लिग्नाइन, जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल विच कॉजेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक लिग्नाइन. मतलब वो लिग्नाइन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल फॉर्म लाइक शुगर्स, organic acids, amino acids, polyphenol, organic compounds etc. into the final humic acid, fulvic acid और humin. तो ये सब क्या है? These are the humic substances. और finally हमें वही चाहिए होता है. So how this is the mechanism for the formation of soil humic substance. Next point is which microbes are involved in humus formation. तो mainly बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिड्स ये ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं. सो फंजाई में पेनिसिलियम इज देयर, एस्परजिलस एंड एक्टिनोमाइसिड्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं डार्क ह्यूमस लाइक सब्सटेंसेस, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड पॉलीफिनॉल्स. हमने इसी पाथवे में देखा अमाइनो एसिड्स, पॉलीफिनॉल्स, शुगर्स. तो दिस आर नथिंग. जब ये फॉर्म होता है इसका मतलब भी दिस आर द ह्यूमिक सब्सटेंसेस, मीन्स दिस इज द ह्यूमस फॉर्मेशन.
तो ये बैक्टीरिया दे फॉर्म द डार्क ह्यूमस लाइक सब्सटेंस, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड polyphenols, and this serves as a structural unit for the synthesis of humic substances. Even spores of Aspergillus niger, they possess the properties of humic acid. So different fungi, actinomycetes, they play a key role for the formation of the humus. Now what are the properties of humus? This particle become bonded to clay silicate surfaces, means humus containing the clay particle और humus substances में clay adsorb होता है. Okay, these are not absorb, I'm using the word adsorb. Okay, so this to the humus, this clay and silicate are adsorbed, referred to as clay silicate, which leads to the formation of clay humus complexes. Clay humus complexes, to the humus clay is been adsorbed. Okay, clay material is been adsorbed. Second is humus stores and releases soil nitrogen. हमने सेकेंड या थर्ड स्लाइड में ही देखा कि ये इट एक्ट एज द गुड स्टोरेज फॉर्म. So it stores and releases soil nitrogen. Even it possesses buffering capacity, means conditions, कुछ conditions को ये resist करता है. Then it possesses cation exchange capacity, anion exchange capacity, and humus absorbs pesticides and other agricultural chemicals. तो जैसे कि यहाँ पर ये ह्यूमस को क्ले एड्सॉर्ब होता है, सो इट इज नोन एज द क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्सेस. इन द सिमिलर मैनर इट एड्सॉर्ब पेस्टिसाइड. एड्सॉर्ब मीन्स इट इज जस्ट एडर, okay, to its surface. So humus adsorbs pesticides and other agricultural chemicals. So these are the different humus properties. Now what are the functions of humus? तो सबसे पहले कि it improves the fertility of soil, it helps for the plant growth. Again it provides magnified nutrition for reduced disease, insect and frost impact. It act as buffering. यहाँ पर हमने जैसे कि देखा कि ह्यूमस possess buffering capacity, सेम ये functions में आएगा. Then it furnishes 30 to 70% of the soil's cation exchange capacity. जो cations molecule है जिन पर positive charge group है, तो वो substances adsorb होते हैं humus में. And the higher a soil's cation exchange capacity, the greater its ability to hold the nutrient until it is needed by the plant and the microbes. It also reduces the soil erosion. So these are the different functions of humus कि वो fertility improve करता है, yield increase करता है, plus it is like a mature manure, and it reduces the soil erosion. Organic matter is a carbon supply for beneficial soil microbes. This is the last function of the humus. So in short, humus, it acts as a compost, but it is the final stage of the composting process, or we can say it is like a mature manure. So this is all about the humus function. In briefly हमने ये सब study किया है. I hope you might have understood this lecture. So yes, thank you.